morning, everybody. Welcome to the Honest Hour. Today we have Mrs. Riitu Chaudary with us, who is a tarot card reader and also astrologer and numerologist. She is a renowned tarot reader, and today we'll be chatting with her regarding her profession, also what inspired her to be a tarot card reader. So we'll start. Hi, Rituji. Hello, Fuji. Good evening. Our audience, first of all, wants to know who Riitu Chaudary is. So let's start with your introduction, ma'am. Yeah, I am a very, very simple homemaker. I've been for the longest time. But last 10, 12 years, I got into astrology and tarot reading and numerology as well. पता नहीं थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बना और इंटरेस्ट पैशन बन गया और पैशन कब करियर और प्रोफेशन में टर्न हो गया पता ही नहीं चला and I'm not a regular typically an astrologist like that, a pandit kind of a person, but a lady, you can relate to very easily, a lady who's just like the lady next door, and very simple and very, leading a perfectly normal, absolutely normal life, Okay, great. So रितु जी, हम जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग आपका पहला प्रोफेशन था या इससे पहले आपका बैकग्राउंड एज अ प्रोफेशनल कुछ और था? नहीं ऐसा है कि I was earlier helping my husband with various things, he was we were into the food line and things like that, so I was helping him because you know how ladies are, they have that one little tip to give their husbands about what to put in the khana and what not to do. तो उसमें मेरा थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन था, इंटरेस्ट था, बट स्लोली एंड स्टेडीली लाइक हर एक के साथ होता है, कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मुझे भी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम्स आई जिसके लिए वेरी वेरी डियर फ्रेंड गॉट वेरी कंसर्न एंड शी सेड चलो मैं तेरे को किसी के पास ले जाती हूँ. तो हम किसी पंडित जी के पास गए, उन्होंने मेरा चार्ट देखा और देखते ही ना उसको बंद कर दिया मेरी पत्री को और कहने लगे कि आप 18 साल अभी आपके प्रॉब्लमैटिक हैं और उसके बाद जाकर आपका गोल्डन पीरियड आएगा. तो मैंने बोला 18 साल, वो 18 साल कब से शुरू होने, कह रहे कल से. तो वो उस बात ने मुझे इतना डरा दिया कि वो मैं और मायूस होकर वहां से वापस आ गई. पर मेरी फ्रेंड जो मुझे लेकर गई थी वो शी वॉज वेरी वेरी वरिड कि ये इसको मैं कहाँ पर ले गई. तो उसने मुझे फिर देखा, खुद पर्सनली देखा, थोड़ा उसको भी इंटरेस्ट है और उसने अपनी किसी और क्लोज रिलेटिव को दिखाया जिन्होंने कि बताया कि अरे ये तो प्लेसमेंट देखी जाती है, उसका नक्षत्र देखा जाता है, उसका नंबर देखा जाता है, किस उसमें बैठा है वो स्टार बेसिकली, जिसकी वजह से उसको इतना डरा दिया गया है. तब जाकर कहीं मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ कि ये क्या चीज है जिसको कि एक मंदिर में बैठे हुए पंडित जी हैं जिन्होंने करेक्ट एनालाइज नहीं किया. एंड श्योर इनफ वो 18 साल बड़े स्मूथली और बड़े अच्छे से बीते, जैसा कि उन्होंने डराया था वो बात नहीं हुई. This thing really interested me and I became very very curious about astrology. तो एस्ट्रोलॉजी फिर थोड़ी थोड़ी फ्रेंड्स और उनकी करती रही, ऐसे देखने लगी शौक में, देखते देखते टैरो का मन कर गया. माय सिस्टर एनकरेज्ड मी टू डू द टैरो रीडिंग कि करो करो करो, बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट है अगर. फिर मैंने उसको सीखा, उससे उसने मेरी और मुझे इंट्यूटिव एबिलिटीज मेरी थोड़ी मुझे उजागर हुई कि देयर इज समथिंग इन मी व्हिच आई कैन गिव एन विद एन इंट्यूशन आल्सो, आई कैन टेल पीपल, आई कैन गिव अ लिटिल प्रेडिक्शन अबाउट इट. ऐसे करके करते करते फिर अब पिछले 2-3 साल से तो आई एम रियली थिकली इनटू इट एंड all day I think I see about 5 to 6 clients there with me and something or the other is always going on regarding all this. Great. So रितु जी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मोर और लेस सेम है. व्हाट इज द हेडलाइन डिफरेंस और यू डिफरेंशिएट, हाउ विल यू टेल अस कि कैसे डिफरेंट होता है? ऐसा होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है. तो ये सन, मून, मार्स, आपने सुना होगा मंगल है, ये शनि है, ये वो है, ये सब होता है.
और एस्ट्रोलॉजी का जो आपके जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी होती है, जिस दिन एक इंसान जन्म लेता है इस दुनिया में, उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में उस टाइम पे, दैट्स व्हाई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द डेट, उस टाइम पर हमारा सोलर सिस्टम की कहाँ प्लेसमेंट है, उसके बेसिस पर इंसान की पैदाइश होती है उस वक्त, और उसका चार्ट बन जाता है, और वही चीज है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करती है। मेरा ये भी मानना है कि हमारे जो पास्ट कर्मा होता है, वो हमारे जब हमारा जन्म होता है, उसके बेसिस पर भी हमारी एक चार्ट फॉर्म होता है। उसी के बेसिस पे आप देखो, हमारी ड्यू डेट सेकंड होती है या थर्ड होती है, और बच्चा फिफ्थ को आता है या सिक्स्थ को आता है, उस दिन सोलर सिस्टम की क्या प्लेसमेंट है, क्या डिग्रीज हैं, क्या नक्षत्र चल रहा है, उसके बेसिस पर एक इंसान का जन्म होता है। तो वो हमारे लिए एक पूरा कार्मिक रिलेटेड हमारी चीज होती है, और वो ही हमारी लाइफ को हमारे को गाइड करता है और हमारी लाइफ चलाता है, और उसी से हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी में अब आगे क्या होने वाला है, या अगले कुछ साल कैसे रहेंगे, कब हमारे लाइक एस्ट्रोलॉजी कैन टेल यू अबाउट योर रिलेशनशिप compatibility, about your moods, about your personality, about your future, about your career, about everything related to your mental situation also. It can tell, I can see the chart and I can tell कि आपकी mental condition किस तरह से है, और आपको वो किस तरह से आपकी लाइफ को चला रही है। एंड बट टैरो इज आपने देखा होगा, जैसे राह में पुराने जमाने में पंडित लोग बैठे होते थे तोता लेके, और वो एक कार्ड सा निकालता था और समथिंग लाइक दैट। तो टैरो इज ऑल अबाउट कार्ड्स। टैरो आई यूज मेनली टू, जैसे किसी का अगर इमीडिएट क्वेश्चन है कि भाई मुझे बताइए मेरी जॉब, मैंने इंटरव्यू दिया है, whether I will be successful in the interview or not, whether I will get my job or not, what will happen to me, that idea you get from the tarot, which is instant. कोई अगर ये कहे कि हमारी शादी हो रही है, ये शादी ठीक रहेगी कि नहीं, वो उस उतने लंबे समय के लिए टैरो इज नॉट वेरी सुटेबल, बिकॉज टैरो विल गिव यू yes और no कि आपका रिश्ता हो जाएगा, but to know that tarot will help your entire life, no, that cannot be done. For that, it's periodical. Astrology is a lifetime thing. So these tarot cards, Rituji, do they stay the same or they keep changing every time when I want to get my tarot card reading? Oh yes, we have about 78 cards in a deck, and they all have different meanings and they all have different, एक spread होता है जिस जो कि बनता है, और हर एक जगह को वो डिफाइन करता है कि आपकी लाइफ पाथ कहाँ जा रही है, आप क्या चाहते हो, फ्यूचर कैसा होने वाला है, आउटकम क्या होने वाला है, वो सब कुछ बताता है। एंड आई थिंक एवरी 2-3 months के लिए आई कंसिडर इट वैलिड, एंड आफ्टर दैट वन कैन गेट अनदर रीडिंग डन टू नो अबाउट द सेम क्वेश्चन। अगर आपका काम नहीं बन रहा, तो आज नहीं बन रहा, तो आप 2 महीने में दोबारा चेक करवा सकते हैं कि अब बन जाएगा कि नहीं। सो दैट दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट टैरो कैन हेल्प मोर। एस्ट्रोलॉजी में कई बार कल का ही जवाब नहीं आ पाता, टैरो में आ जाता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। Yeah. मैम, जब आपने ये टैरो कार्ड रीडिंग एज अ प्रोफेशन शुरू किया, सो आई वुड लाइक टू नो what were you personally facing in terms of health or a personal life or a professional life which inspired you to take this reading ahead as a profession? See, firstly I told you मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस ऑकल्ट साइंसेस में जा चुका था। आई वॉज वेरी वेरी keen to know how all this works. Basically, I am a little more scientific than believing, having a look at the cards and something. मुझे कुछ connect चाहिए होता है, कोई चीज चाहिए होती, तो टैरो के लिए मुझे एक फॉर अ मिनट इवन आई थॉट कि क्या ये कार्ड्स आपको कुछ बता सकते हैं आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, या आपको कैसे वो गाइड कर सकते हैं, कि तो कार्ड्स हैं। पर अगर आप देखो तो कार्ड्स में जब वो मेरे आने लगे कार्ड, जब मैं देखने लगी कि ये किस तरह से प्लेसमेंट होती है, किस तरह से जवाब आ रहे हैं, तो मुझे खुद को, जब मैं किसी क्लाइंट को बताती थी और वो क्लाइंट मेरे साथ रेजोनेट करता था, तो वो उन चीजों ने मुझे खुद भी बहुत हैरान किया कि ये कैसे, मतलब मैं उनको सामने, वो मेरे बैठे हैं और उनको मैं कैसे बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में क्या उनकी ऑब्स्टिकल है,
वो कार्ड्स बता देते हैं, दे जस्ट आस्किंग मी अ जनरल रीडिंग, पर उस कार्ड से मुझे पता चल जाता है इनकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ रही है, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनका आउटकम होने वाला है 2-4 दिन में, क्या इनकी you know what is their short term future, what is their long term future, everything I can tell them and they are resonating with me. That was a very very important thing. अगर जैसे मुझे कोई पूछ रहा है कि हमारी हेल्थ के बारे में बताओ, बस उन्होंने इतना ही सवाल किया है, तो when I open the cards and I see a person juggling with health and they're absolutely looking wise, they're absolutely not looking unhealthy and they're very normal, but yes, they end up resonating with me ki this, yes, we are juggling with our health, and then I just guide them how to go about things and how it can, they can be helped and in how much time they should be getting okay and things like that. Great. Ma'am, tarot card reading के साथ you also you are into numerology. Yes. So how does these numbers affect our life or our daily health or money which is coming in? I would like to know a little bit. That's a really interesting side of your profession. Yes, numerology is also very interesting. Like I told you, I have a scientific kind of a mindset ही मेरा ऐसे है, तो उसमें numerology is also all about numbers. And every number, आपने देखा होगा कभी कभी कि आपके लाइफ में एक कोई पर्टिकुलर नंबर है जो आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन आता है, या आपकी कोई पर्टिकुलर डेट है आपकी मंथ की, जो कि आपको लगता है कि अरे आज 7 तारीख है, आज तो कुछ होकर ही रहेगा, आज मेरी अच्छी खबर है, या मेरा कुछ आपके कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में वो नंबर आता रहता है, ये ऐसा लाइक वी फील. एंड नंबर्स आर ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड. लाइक अगर आप देखो नंबर 7 ले लो, जैसे हमारे 7 ही फेरे होते हैं, 7 ही कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 समुंदर पार हम जाते हैं, तो ये नंबर्स का भी एक मैजिक है हमारी लाइफ में, which I understood only when I did a course in numerology, कि ये क्या चीज है. And then every day, every person is born with a distinct number. There will be many people who will be born with the number as 1 or 19 or 28, but you have to calculate their month, the year of their birth, and उसकी personality किस तरह से फिर change होती रहती है. 1 number की तो बहुत दुनिया है. आफ्टर ऑल एक महीने में 3 बार तो 1 आता ही है, 1 भी आता है, 10 भी है, 19 भी है, 28 भी है, जो कि टोटल करता है 1 में. तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट ईच पर्सन विल हैव अ सिमिलर डेस्टिनी और अ सिमिलर पर्सनालिटी, बट व्हेन वी कैलकुलेट देयर एंटायर डेट ऑफ बर्थ, व्हेन वी गेट द प्रॉपर आंसर फॉर that defines our life and our personality, our careers. And उसके साथ अगर आप अपना नाम को भी जोड़ लें, जो कि आपका लकी नंबर है, उसके साथ अपना नाम बना लें, अगर आप अपनी कार का नंबर उसके साथ ले लें, अगर आप अपने घर का नंबर उस हिसाब से ले लें, so these things have a great impact on our lives, a lot of impact. You get to know your lucky number, your lucky colors are all based on numbers. That's a interesting insight into numerology. I'm hearing it for the first time. So, ma'am, coming back to the tarot card reading, as you said that you only get to know the present situation of whatever you are going through. ये तो हुआ कि आप जान गए हैं कि आपका प्रेजेंट में क्या चल रहा है. How do you heal people, ma'am, with this tarot card reading? How does the healing work? Yeah, I'll tell you, there's somebody would come to me, they're having a relationship issue, right? And they've come to me and they are asking me about the relationship. So at that time, we have a card which gives the guidance also. तो उस रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल है, कभी कभी ऐसा कार्ड आता है जो कि शो कर रहा है कि द पर्सन शी इज इन लव विद और ही इज इन लव विद इज वेरी अग्रेसिव, or there is infidelity in the relationship, or there are anxious moments, लड़ाई झगड़ा, there is आपस में मनमुटाव है या कुछ भी है, तो वो हम I can tell them that these are the issues that are bothering you. And many a times, I'm not God, but 99 or 95% of the times people do resonate with that. And then there is a card which is the outcome. Then I give them the guidance that based on this tarot reading, based on the cards, these are the measures you should take. And उसमें ये भी पता लग जाता है कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी, ये भी पता लग जाता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, and in how much time frame
वो ठीक हो सकता है, and then one can go further down, with the relationship. They can carry on or whatever. Same is with the job, with health, with everything. Tarot is basically used for guidance. This is what you should be doing to save your relationship, or even a guidance that this is, the man is not good or the woman is not good, you please break off your relationship, because it can only get you into deeper trouble. That's how we It's so serious. It's getting serious and intense that a person is also asked if you want to break up the relationship. Yeah, they do. I have to tell them, but because if this thing is not going to end and the cards are all negative, then it is better that the person moves on. And if the guidance is used, sometimes it really helps them. And sometimes the card is showing that there could be a new person entering in your life who will give you more happiness. I mean, like, there are instances I've had to deal with all these things as well. So they are healing people. Somebody wants to go for a spiritual healing, somebody has to go for a meditative healing, somebody goes for a overall generally like sometimes a small little guidance, like if you do this or something like that, also can help people a lot. Ma'am, is there any case which gets prolonged also? Are there cases? In tarot reading? Yeah. Yeah. Of course, they keep coming back again and again. Ma'am, you said this, and now we've done this. Now a new proposal is coming our way, whether we should take it up or not. And I keep guiding them that yes, you should go or you should not go. Or, I basically want people to ask me the question when they are in the decisive moment, when they can say a no to something. It is not advisable to go to a tarot reader once you have taken up your job and you're saying, will this job be okay or not? So if that person, if there is I always ask them that if you are willing to say no to that, then only you go ahead with the reading. Otherwise, there's no point. Otherwise फिर वो negativity develop हो जाती है, and काम अच्छा भी चल रहा है तो आप negative एक बारी सोचने लग जाओ, then there is no end to that. So I always tell them, पहले हो जा, करना है कि नहीं करना. अगर आपके पास ना कभी है answer, then you come to me and you ask me. Otherwise, don't. Absolutely, it makes sense. It makes Yeah. sense. So 11 years of long career. Yeah. How many clients have you been seeing since 11 years? How many resolutions? I would love to know. Plenty now. I'm doing like since the last 2-3 years, I'm doing almost 4 to 5 every day. So that combines my astrology. Some people just want numerology. Some people are opening up a new shop. They want to know what name resonates with them, so that, like if it is resonating with their birth date or not. Some people come for name change. Kisi ke bachcha ho raha hai, uske liye. There are plenty of people who are interested in knowing, and everybody wants their betterment, right? And if there is a little guidance given to them, what's the harm in it? And so I think I must have seen more than, in thousands now. It is a really good work you're doing out there. If something negative is turning into positive, this can't get any better. You're really helping many people out. Ma'am, do you also look for children's tarot card reading or astrology? See, generally I avoid. I tell the parents that if the child is too small, please don't go for it, because एक माइंड सेट हो जाता है. स्पेशली टैरो में तो चलो, अगर वो बच्चा बहुत बीमार है बहुत दिन से और अगर उन्होंने उसका टैरो पूछना है, देन आई डोंट माइंड, बिकॉज आई फील कि चलो अगर उनको टैरो पूछ के अगर उनका हेल्थ ठीक हो रही है, उनको थोड़ा बेटरमेंट हो रहा है, तो व्हाट्स द हार्म? Like if I can guide them within 2-3 months, if it's basically we are soothsayers, right? We are soothing people by our readings and things. तो अगर उनको हौसला मिल रहा है कि आपका बच्चा 4 दिन में ठीक हो जाएगा या 10 दिन में ठीक हो जाएगा, then what's the harm? And अगर उनको but लेकिन अगर उनको मुझे कोई पूछ रहा है life predictions कर दो, I don't really encourage this. I have a question here from an audience who's asking कि कितने साल तक के बच्चों का टैरो कार्ड रीडिंग आप रेकमेंड करते हैं? See, I recommend, children who are in the class 10 and 12, because what happens is that
10th और 12th में बच्चों की करियर चेंजेस आ रहे होते हैं. कई बारी sometimes the parents are saying तुमको तो डॉक्टर ही बनना चाहिए. They are instilling that, but the child could be doing very well as a creative person, or he could have done very well in the journalism, like he could be a very good writer or a very eloquent speaker or something. So why make the child go for becoming a doctor? So whenever there is a crossroad, and whenever there is a confusion in anyone's life, that's the time I feel parents should come to, for guidance, because we do have counselors in school. They judge the child's IQ and, guide the parents as to which line the parent should go for. But astrologically, what line suits them, what is their ambition in life, what is it they want. So I've had parents who come to me, and I've guided them like this, and they have thanked me so much that they were, the child was going towards medical stream. उसने 4 साल में की जगह 2 साल में छोड़ देना था. What's the idea? Okay. So that's the time it is mostly recommended. When it's a career switch or a career decision, or there's a girl who came to me who was in love with someone, a mother who came to me whose daughter was in love rather, and they didn't know how to hold her from getting married. So I guided her. I said, please go, let her go. She will not stop the marriage. The marriage is, there's a very strong योग बन रहा है, तो जो भी है might as well accept the child's choice and go on with it. So ये crucial moments होते हैं जब 14, 15, 16, 17, that's the time one can go for astrological precisely the teenage, you're saying. Precisely. Yeah. That's the time everybody is very confused. The parents and the children, they are all very, very confused as to what should they go. अच्छा, कई बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो बाहर जाने का योग बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखता है एस्ट्रोलॉजी में कि बच्चा जा पाएगा कि नहीं, हायर स्टडीज हैं कि नहीं. करोड़ों माँ बाप लगा देते हैं और बच्चा वापस आ जाता है घर. राइट. So these are the kind of things where I think astrology and all these things are very, very helpful, because I don't use my astrology for big time predictions कि अरे आप तो बस ऐसे चलो वैसे चलो और ये करते रहो आपका सब ठीक हो जाएगा. I don't do those things. I just guide people as to this is the path that you should go to. This is the guidance I can give you. These are the things, these are your strengths, these are your weaknesses, and then you go on with it. That is the next question framing up, which says कि कुछ लोग रितु जी जाते हैं पंडित के पास, एंड पैरेलली वो एक टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाते हैं. तो which one as a strong, like as per your experience, whom do you think should person be first contacting? क्योंकि ये जो पंडित होते हैं ये आपको ग्रह नक्षत्र सब में डाल देते हैं, बट रेजोल्यूशन नहीं मिलता, और बहुत लंबी लंबी कुछ विधियां कुछ उपाय भी बताते हैं. कुछ लोगों को तो सूट कर जाते हैं पॉजिटिवली, बट कुछ लोगों को कोई असर नहीं होता. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट एंड व्हाट डू यू रेकमेंड? See, firstly, it depends upon your query. If it is a query कि कल हमारी नौकरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, हम आज इंटरव्यू के लिए गए हैं, उसमें भी मैं ये बोलती हूँ किसी को कि आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप जाने से पहले मुझे मत पूछो, इंटरव्यू दे आओ, उसके बाद वापस आके पूछो कि मेरा जॉब लग जाएगा कि नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे. राइट. तो अगर आप पहले पूछ के जाओगे तो यू विल गो विद दैट माइंडसेट कि मैम ने बोला मेरा तो होना ही नहीं, और आप उसको और भी बिगाड़ के आ जाओगे. सो एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, come back to me after your interview is done, and then you can ask the question about whether you will get through or not. And you're right, astrology में बहुत विधि विधान बता दिए जाते हैं, but I am not into those big विधि एंड विधान और ये करो वो करो फलानी जगह जाओ. जस्ट बेसिक भगवान का नाम लो, जो भी आपके, जो आप मंत्र हर रोज अपने घर में करते हो, भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा. एंड यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ्स मोर देन योर वीकनेसेस, enhance your strengths, because people astrology में I am telling you, मैं जब गई थी एस्ट्रोलॉजर के पास और जब मुझे उन्होंने बताया था कि आपका अभी 18 साल के लिए वक्त बहुत खराब आने वाला है, आप सोच नहीं सकते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ. और वो दे ट्रैप यू इनटू विधीज एंड विधान, हम आपका मैजिक कर देंगे ओवरनाइट. कुछ नहीं होता.
nothing works at all. बल्कि आपका डिप्रेशन बढ़ जाता है ये सोच सोच के कि क्या बुरा होने वाला एक तो पहले बुरा भी आपको लगता है, एक आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। पहले आप एस्ट्रोलॉजर की फीस देते हो, फिर वो आपको 15,000 के उपाय करवाता है, फिर वो 15,000 के उपाय करके आपका कुछ काम बनता नहीं है। तो इट्स बेटर टू टेल द पर्सन दैट इस वक्त आपका समय अनुकूल नहीं है, लाई लो। अननेसेसरीली आप अपने आप को बड़े बड़े काम खोलने जा रहे हो। हमने बहुत खोले, खुद बड़े बड़े काम खोले व्हेन वी वर टोल्ड दैट आप जाइए करिए, एवरीथिंग वी आर देयर फॉर यू, हम आपका संभालेंगे सब कुछ, ये कर लेना वो कर लेना, और हैवी लॉसेस। व्हाट्स द आइडिया? इसलिए बेटर ये है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करके उसके हिसाब से चलो। अगर आपका समय ठीक नहीं है तो नया काम अभी मत खोलो, या अपनी जॉब चेंज के लिए आप मत जाओ। आई ऑलवेज टेल देम, अगर आपका बुरा समय चल रहा है, जो आपके हाथ में है उसको संभाल के रख लो, उसको समेट के रख लो, उसको अननेसेसरीली आप बर्बादी के रास्ते पे मत जाओ। आई ऑलवेज गाइड पीपल टू डू दीज थिंग्स रादर देन सेइंग कुछ नहीं होगा, आप ये 15,000 रुपए मुझे और भेजो और मैं आपका ये उपाय करवा दूंगी, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी। आप मुझे बताओ, आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हो? किसी के लिए नहीं कर सकते। इवन आई डोंट हैव द टाइम टू प्रे फॉर एनीवन। So these are all, fraudism, and also taking the advantage of the sentiments and emotions of the client. So best is to just be prepared when you come to an astrologer, especially an astrologer like me, that I will be telling you the truth, and from there you have to just go by कि आप अपने आप को hold yourself and from wasting more money and destroying whatever you have also at home. परफेक्ट मैम ऑल्सो जस्ट लाइक यू सेड कि इस नाम पे बहुत सारा फ्रॉड भी होता है सो यू बीइंग अ प्रोफेशनल इनटू टैरो कार्ड रीडिंग if somebody wants to be doubly sure that he is going to the correct person, what are your tips and advices? Is there any certification which we can ask the tarot card reading or something? Please See, guide. certification, so I don't know how much that will work, because I have also taught some people tarot reading and things like that. But unless you don't practice it again and again, and unless you don't have that intuitive ability from within, जब हमारे जैसे कार्ड्स हम खोल के रखते हैं तो कई बार कुछ नेगेटिव दिख रहा होता है, बट एक स्पार्क एक टैरो रीडर को आती है, एक आपकी स्पेसिफिक आपकी वो एक यूनिक एबिलिटी है जो कि आपको पिन पॉइंट कर देती है कि दिस इज वेयर द कॉर्ड इज स्ट्रक, एंड यू नो दैट आप इनको आप एक पॉजिटिव आंसर दे सकते हो। तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। I don't think a certificate is effective. You have to just have faith. Firstly, go with faith. Try the person out. If you don't resonate, if you don't agree with the person और आपका कोई बात नहीं बनती, then it's a different matter. But first तो आपको faith के साथ जाना ही पड़ेगा किसी के भी पास जाओ। Faith is at most important. Yeah, faith is most important. And you have to, अगर आप faith रखोगे तो आपका कार्ड रीडिंग भी अच्छी आती है। मैंने कई लोगों का देखा वो आपका टेस्ट ले रहे होते हैं तो वो when they don't have faith तो वो आप you don't connect with that person, right? That is why I asked this question because so many people end up going to a person जहाँ वो खुद ही श्योर नहीं है कि why they are going there. Yeah, नहीं, sometimes they just go कि चलो इसको आजमा के आते हैं। आजमाने के लिए जाओगे तो आपने पहले ही अपनी बॉडी लैंग्वेज क्लोज करी हुई है। बॉडी का आपने जो कनेक्टिविटी आपने टैरो रीडर के साथ करनी है, वो कनेक्ट ही आपका बॉडी ही क्लोज है ना, यू आर क्लोज। जब आप क्लोज जाओगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। Then the answer also will not be to your satisfaction because you are testing the person कि इसको कितना पता है, इसको कितनी knowledge है। So go with faith. ऐसा नहीं है कि all tarot readers or all astrologers are fraud. There are people who are doing it very well, and yeah. Ma'am, now that I have my golden chance to chat with you, Yeah. you need to tell me certain things about my birth date also. Oh, yes, I know your birthday, and आपका birthday का मैं अभी एक सेकेंड आपको थोड़ा सा देख के भी बताती हूँ। Thank you so much. I was waiting for this moment. Yeah. So your birthday is on a nice day. Are you a very emotional person?
Not really, not much. No? क्यों? I am a हाँ, bit practical, a lot practical. practical, yeah. But sensitive? Yeah, little sensitive. Yeah, sensitive हैं आप. And you know what you're doing as your profession, as your work, that suits you well, and it will give you a good name, fame, and wealth as well. In an, you know, whenever eventuality, whatever, and anything to do with writing and all that also can help you a little bit in your life. एंड ज्यादा करके आप अपना ना लकी नंबर्स आपके लिए 6 और 7 आ रहे हैं मेरे. यू नो 6 और 7 लकी नंबर्स बोलने से what I mean is that take your important decisions on a date which is totaling to 6, or it is the 6th or it is the 7th. These two dates suit you a lot. And also green color suits you a lot. The color green, also pale blue, pale yellow, ये सब आपको ज्यादा किसी भी ज्यादा सूट करते हैं. और किसी भी इम्पोर्टेंट डे के दिन अगर आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, that's the day you can avoid the color black, you know. That's a cool idea. And yeah, and some you know, silver and ये white चीजें, silver things suit you a lot as well. Wow. And दो लोग और हैं जो आपके बर्थडे के साथ रेजोनेट करते हैं, द फेमस सेलिब्रिटीज राजेश खन्ना एंड शाहरुख खान. So Wow. that is That's the best thing I just got to know. yeah. So Thank you that's so much, ma'am. yeah. So, ma'am, just the final thing before I close the session is, अगर आपको approach करना हो, are you available on some website you would like to share with the audience? Well, I'm on all the social media handles, on Instagram, on Twitter, and on Facebook. And also, you know, my WhatsApp number is flashed everywhere over there, and they can contact me anytime, and then we can, you know, take it up further. And Are you also doing a video conferencing these days for the tarot card reading? Well, I usually do WhatsApp voice call, but if a client is wanting a video call as well, I mean, I'm very open to it as well. So, before we close this session, Ritu ma'am, I would like you to give one cool advice or a tip to the viewers right now. Sorry, advice or? Any advice or tip you would like to share for the audience? Yeah, you can always, you know, like not get scared of whatever is going on in your life, because everybody has some, you know, some star which is helping them cope up with their life, and usko use करे. और ना शनि ना राहु ना केतु किसी से डरे ना, और अपना कर्म अच्छा करते रहें. एंड देयर इज, यू नो, लाइक जिनका कर्म अच्छा हो उनको उनका शनि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता. सो जस्ट स्टे cheerful, stay happy, and you know, just go on with your life with the positivity. So much positivity before closing. Absolutely well said कि कर्मा से बड़ा कुछ नहीं है. Have faith in God and do your role in the society and you'll get paid. Thank you so much for your time, ma'am. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सारे myths भी clear हुए और मुझे भी अपने बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता चला, which is quite interesting and lovable. Thank you so much for your time, Ritu ma'am. We'll connect once again with a great session with you. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you.